Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सर। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Key domestic stocks indices tumble more than 2.5%. Sensex closes below the 53,000 mark. Nifty finishes below 15,800 level. Rupee weakens to 77 rupees and 73 paise against the dollar. And Brent crude prices decline to trade near $107 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज फिर हुई गिरावट। प्रमुख सूचकांक 2.5% से अधिक नीचे फिसले। सेंसेक्स घटकर 53,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी 15,800 के स्तर से फिसला। $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, $77.73 पर हुआ बंद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $160 प्रति बैरल के नजदीक आई। वैश्विक निराशाजनक खबरों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज फिर गिरावट हुई और प्रमुख सूचकांक 2.5% से अधिक घाटे में रहे। सेंसेक्स 53,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 15,800 के नजदीक आकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1,416 अंक यानी 2.61% घटकर 52,792 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 431 अंक यानी 2.65% गिरावट के साथ 15,809 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी गिरावट थी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.66% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.29% की गिरावट हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 2.5%. Both indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex closed below the 53,000 mark while the Nifty ended near 15,800 level. The Sensex plunged 1,416 points or 2.61% to finish at 52,792, while the Nifty declined 431 points or 2.65% to settle at 15,809. In the broader market at the BSE, the mid-cap ended 2.66% down, while the small-cap index declined 2.29%. In the Sensex pack, shares of 27 out of the 30 companies logged losses. ITC was top gainer as it added 3.4%. Dr. Reddy Lab gained 0.5% and Power Grid rose 0.3%. On the other hand, Wipro tumbled 6.2%, HCL Tech plunged 5.5%, Tech Mahindra and Infosys both declined 5.5% each, while TCS fell 5.2%. In sectoral indices, all the 19 sectors logged losses. IT sector tumbled 5.3% and tech plunged 5.1%. Metal declined 4.2% and telecom fell 3.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 778 companies gained while 2,557 fell. Shares of 111 companies remained
unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ, 77 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.21% कमजोरी के साथ 103.33 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे, खास तौर से आईटी सेक्टर की कंपनियां और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला। क्या रहा मुख्य कारण आज की गिरावट के पीछे? देखिए, जो अभी हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वापस बहुत आगे की आगे बढ़ रहा है, मतलब हाई पोजीशन में। यूएस में इन्फ्लेशन हाई है, दूसरे डेवलपिंग इकोनॉमीज में, इमर्जिंग इकोनॉमीज में, इंडिया में WPI जो है 15% के ऊपर चला गया है। तो ये कुल मिला के जो इन्फ्लेशन की स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जिससे प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स हैं प्रोड्यूसर्स के कम हो रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक मेजर चैलेंज हो गया है। तो अभी उसी के मद्देनजर जो रिवर्सल प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि फेड ने अपने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, उसके बाद हमारे अपने सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किए। तो ये कुल मिला के आने वाले टाइम में शॉर्टर टू मीडियम टर्म का जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट करेंगे। और मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट्स देखती हैं कि आने वाले टाइम में कितनी अर्निंग्स रहेंगी कॉर्पोरेट की और कितना इकोनॉमी आगे ग्रो कर पाएगी। तो उसी के मद्देनजर मार्केट सब काफी पहले कुछ दिन पहले कंफ्यूज थी, तो अभी मार्केट को एक ऐसी डायरेक्शन है कि अभी ग्रोथ इम्पैक्ट होगा और आगे ग्रोथ के आने के चांसेस आगे थोड़े लिंगर रहेंगे, क्योंकि जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आती, इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होता है। तो उसी की वजह से और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि फेड ने रेट इंक्रीज करने शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर काफी इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, जिस वजह से मार्केट डिसलिरेशन हमने देखा कि डॉ जोन्स में बहुत गिरावट रही है, उसके बाद दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज में, इंडिया में। तो कुल मिला के एक नेगेटिव जो सेंटीमेंट बना है कुछ दिनों से कि इन्फ्लेशन अब बियॉन्ड कंट्रोल हो गया है और इसके थमने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, खासकर जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी उसका कोई पैमाना नहीं है कब जाके रुकेगा और वो कितना आगे और बढ़ सकता है, जिससे कि जो प्राइसेस हैं, जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं और एस्केलेट हो सकते हैं, जिनका जो इन्फ्लेशन सिनेरियो है, खासकर जो होलसेल प्राइसेस हैं उनके ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी की वजह से ये सब डिसलिरेशन देखने को मिल रही है। So Dr. Sharma, this is shaping up to be the most volatile year for the markets in over a decade so far, primarily because of the uncertainty about the impact of aggressive rate tightening, and this is from both ends, victimizing the stocks. Right. So going forward, where do you see this halting? Yes, because where now, and when? I mean, yes, your question is very good, because now unfortunately this base effect is also reflecting in the inflation, because last year because of corona the base was low, so now because of the low base effect the inflation is in the higher and higher trajectory. That is number one. And number two, because international commodity prices are majorly weighing in the WPI inflation, so there is no respite in the international commodity prices that they will come down and provide any respite to the high commodity prices. And number three, going forward, now the banks, particularly the banks in the advanced economies like US and also our bank, they are increasing the rates. So that is a major knee-jerk reaction by the central banks, so that the demand comes down and the inflation also comes down. So if the demand is coming down, then the people will demand lesser goods and services, and the companies again will demand for the less commodities, international commodities. So overall the impact will be there on the CPI inflation and the WPI inflation, but that will impact the growth scenario, because growth was majorly boosted by the demand,
pent up demand, then the strengthening of demand by the major reforms by the government of India. Then now when we are not able to control inflation from the supply side, which is majorly from the international commodities, so that's why the now the central bank is increasing the rates. That will impact the demand and slow the growth scenario, and markets have very much analyzed the scenario, and markets are not able to move up because the corporate earnings will also slow down. Firstly, by the lesser price cost margins because of the high commodity prices. Now, secondly, the increased cost of capital, which is escalated by the hike in the repo rate. So how do you react to the rupee weakening today to 77 rupees and 73 paise? Juxtapose that with the foreign outflows. A weakening rupee makes investment in equities unattractive to foreign investors. Yes, I think effect is the withdrawal of the foreign investments, like FIIs are selling and they are demanding the dollar, so dollar demand is on high at this juncture when there is outflow from the market, capital outflow from the markets. That's why rupee is impacted. But I don't see that rupee, this is the actual rate of the rupee. This is majorly because of the volatility in the stock market and deceleration in the stock market in a major chunk. Like today we saw a great deceleration. So that is impacting the rupee scenario. But with the stability in the markets, I believe the rupee will improve, strengthen further, because we have a great story. We will again attract the funds. So this outflow is not stable and constant. This is temporary. We will again attract the capital flows because we have a great story, and we are growing fast. We are the fastest moving economy in the world economic system. So I think this is the passing phase, and in the coming weeks we will saw the stability in the markets and stability in the rupee, and markets becoming strong once again. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे अभी जो यानी आपने चर्चा की उसमें कि जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ रही है और चिंता का विषय है। इसमें हम समझना ये चाहेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे जो मुख्य कारक हैं वो कहाँ हैं। आपने कहा कि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के चलते और वैश्विक युद्ध परिस्थितियों के चलते संकट बढ़ा है पूरी दुनिया में। हम भारतीय परिस्थितियों में समझना चाहेंगे कि कहाँ बाधाएं हैं और सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास क्या उपाय हैं जिनमें बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जा सकें। जी, थैंक यू। एंड आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। फर्स्टली तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा फूड प्राइस इंडेक्स है जी, उसमें लास्ट ईयर क्योंकि हमारी सप्लाई बहुत अच्छे थे और बड़े अच्छे से सब रिफॉर्म्स हो रही थी और फूड प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में थे, लो थे, काफी इन्फ्लेशन भी लो था उसमें। तो जिसका अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले बताया कि लो बेस होने की वजह से फूड इंडेक्स भी काफी हाई रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा फ्यूल में चाहे लास्ट ईयर भी बेस थोड़ा हाई था, लेकिन अभी उसी बेस के ऊपर जो क्रूड प्राइसेस में जो एक एस्केलेशन आई है तो वो अगेन एस्केलेट हो गया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो काफी हाई लेवल पे चली गई है, जिसके कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक तो लो बेस इफेक्ट की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है फूड में, और दूसरा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर। तो आने वाले टाइम में जो सजेस्टिव मेजर्स हो सकते हैं, एक तो अगर स्टेट्स कम फॉरवर्ड आए, स्टेट्स आगे आए, अपने जो एक्साइज ड्यूटीज हैं कम करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो थोड़ा रिस्पाइट हो सकता है। उनको थोड़ा सा पैसा वो झेलना पड़ेगा कि रेवेन्यू में आम आदमी की बात करते हैं तो उनको बेनिफिट होगा। या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इसके जीएसटी के एम्बिट में ले आएं, जो शायद अभी शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो हमारे काफी हाई हैं, लेकिन फिर भी जो सरकार को एक्साइज रेवेन्यू लॉस होगा वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन इसके बारे में सोचा जा सकता है मीडियम टर्म में कि इस आने वाले टाइम में अगेन, क्योंकि क्रूड प्राइसेस तो हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, एक साल में अगर डाउन टर्न है तो उसके अगले साल में बहुत तेजी आ जाती है, तो जो इन्फ्लेशन को काफी स्टोक करती है। और तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो सप्लाई डिसरप्शंस हैं, खासकर जो हमारे इंडिया में जो मूवमेंट है
जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें और एफिशिएंसी, कई जगह पे कई बार क्या होता है कि रोड ब्लॉक्स होते हैं, कई बार सप्लाई नहीं पहुंच पाती और होर्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है आर्टिफिशियली शूट अप हो जाते हैं। कई बार वो कमोडिटी अवेलेबल भी है मार्केट में, लेकिन उसकी एक स्केर्सिटी जो कि एक मैनिपुलेटेड है, उसकी वजह से मतलब उसके प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास होने चाहिए कि कोई भी जो इसेंशियल आइटम्स हैं उनको आगे होर्डिंग ना हो पाए, जिसकी वजह से एकदम से एस्केलेशन आती है फूड प्राइसेस में पर्टिकुलरली। और चौथे नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे सप्लाई चेन्स हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स खास करके, जो जहां से हम अपना इंपोर्ट करते हैं, और कई बार इंपोर्ट हर्डल्स होती हैं या फिर हमें सही समय पे वो सामान नहीं मिला, और जो एफिशिएंट वैल्यू चेन्स हैं जहां पे हमें एक सस्ते कंपैरेटिवली एक अच्छे प्राइस पे माल मिल सकता है, तो वहां पे हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं वहीं पे हम कंसंट्रेटेड रहें, जहां से हमें कई बार काफी बड़ी प्राइस पे माल खरीदना पड़ता है। तो हमें एक ऐसी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जहां पे हम कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर, एक अच्छे प्राइस के ऊपर अपना सोर्सिंग ऑफ इनपुट्स कर पाए। तो इसी वजह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्फ्लेशन विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली टू द नॉर्मल लेवल, बट इससे काफी रिस्पाइट हो सकता है इन सजेशन। So from the common man's perspective in this volatile market, which sectors should the investors look at? FMCG, pharma, capital goods, or manufacturing, whose valuations are moderate at the moment and reasonable yes. in a long-term basis. What would you recommend? Like in the volatile market, I don't suggest any retailer to participate in the market, because markets are very, very volatile, and they should not be seeking the shorter term profits. But for the medium to long term, I think there are a lot of sectors which are very, very attractive at this juncture. I would say this pharma sector is also very attractive. Then the technology sector is very attractive. Then infrastructure, like energy level. All these sectors, I think we have a lot of promising sectors in the in our ambit, in our economy. But in the shorter period, I think there is no sector which can provide the immediate profits to anyone. So in the volatile markets, I think if someone is investing, there must be a medium to long term strategy to invest, not a shorter term. One major reason why the stocks went down drastically today were, one, retailers at the Wall Street, and two, in the Chinese market, the Tencent added to the Indian or the Asian wounds. So right. These are the two areas because of which we really went down today. So, but retail is something that's not going to go anywhere in the US, and it will have its repercussions on us over here. In fact, the US Fed had in the past said that it would increase US interest rates until there is a clear and convincing evidence that inflation is in retreat. But ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है. Interest rate may also have its own ill effects, because on the US demand, it could lead to recession in the world's biggest economy and have again some repercussions on the world economies. I don't think that there will be a recession in the US economy, because now they have recovered from the impact of coronavirus. There will be a lot of measures to stop the recessionary conditions, but definitely there will be impact on the financial markets majorly. But the GDP numbers will slow, but not in that much category that the economy is entering in the recessionary mode. But the stocks, like the IT stocks, they fall significantly because demand is going to be slow in the advanced economies because of the hike in the policy rates. So major demand is coming from the advanced economies for our technological companies, IT companies. So going forward, I think there must be calibrated approach by the economies, because now the economies are recovering from the daunting impact of coronavirus. But there should not be more knee-jerk reactions
like we observed during the last month. Fed increased and then RBI increased the policy rate. Now there must be a calibrated approach to address the inflation and growth trade-off. There must be a balancing. Like we should not sacrifice our growth which we gained with many efforts from the lows of coronavirus. Dr. Sharma, Nomura is saying that they expect a 50 basis point hike in June against 35 points earlier. Please, go ahead. Yes, there is uncertainty and if the inflation is going up again and again, then there will be some more hike in the policy rates. But there must be an approach of the synchronization or calibrated steps, that there is a proper addressal of both the problems, in addressing the inflation and then supporting the GDP growth. Okay. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बड़ी गिरावट देखने को मिली, हालांकि चीन में लिवाली भी हुई। अमेरिकी शेयर बाजार में वर्ष 2020 के मध्य के बाद से कल हुई सबसे बड़ी गिरावट का असर आज दुनिया भर के निवेशकों पर दिखा है। इसके अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर भी निवेशकों ने बिकवाली की। हालांकि इन सब खबरों के बीच चीन में लिवाली तेज रही और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स कारोबार बंद होते समय 0.9% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 2.5% लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.9% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% नीचे आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.1% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार में चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक बिकवाली चल रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 2.1% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। जर्मनी का डैक्स 1.6% नीचे चल रहा था, जबकि फ्रांस के कैक 40 में 1.8% की गिरावट बनी हुई थी। The U.S. share markets ended sharply lower yesterday amid worries about the U.S. economy after the retailer became the latest victim of surging prices. It was the worst one-day loss for the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average since June 2020. The Dow Jones Industrial Average Index tumbled 3.6%. The S&P 500 plunged 4% and the Nasdaq Composite logged heavy loss of 4.7%. Dr. Sharma, ignoring inflation is no more an option in US or the rest of the economies, and steep earning downgrades globally, it seems, is a real possibility. Yes, that is true, but there are also policy supports, I would say. Earlier in the corona period, there were a lot of financial stimulus, and almost all the respective governments of the countries which were impacted by the coronavirus, they pumped so much money in the market. But now they are gradually withdrawing the loose monetary policies. But there was also a major policy support. There were a lot of reforms by the many economies to support their respective businesses, and particularly the small businesses like India. We took so many reforms for the support of the economy, starting from the month of March to the March-April of the next year, 2021. There were plethora of reforms to support the economy. So only withdrawal of the monetary
system like liberal monetary system, tightening of the rates, will not be able to impact much the growth scenario, because there are lot of reforms also which can support the economic growth. But that is true that there will be impact on the price cost margins, and there will be some deceleration in the corporate earnings because of the high cost of capital and high cost of commodity prices and uncertainty in the markets. But in the medium to longer period, I believe if the calibrated approach is adopted by the central banks and there is no knee-jerk reaction further, then the markets can stabilize and businesses can grow up significantly, and the economy will also strengthen in the coming times. डॉक्टर शर्मा, यहाँ हम ध्यान अमेरिका की ओर आपकी ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि वहाँ जो यानी दाम बढ़े हैं, मुद्रास्फीति बढ़ी है, उससे रिटेलर प्रभावित हुए हैं। तो आम लोगों के लिए, आम श्रोताओं के लिए जरा बताएं कि ये रिटेलर किस रूप में प्रभावित हुए हैं और बड़ी गिरावट कल अमेरिकी शेयर बाजार में हुई है। देखिए, उसके पीछे क्या कारण है कि जो रिटेलर प्रभावित होने का क्या है, तात्पर्य क्या हुआ है कि जो जैसे ये फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, तो मेजरली जो स्लो डाउन आती है, जब डिमांड में स्लो डाउन आती है, तो खासकर जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फिर असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ता है, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो अर्निंग्स स्लो होते हैं, तो उनके जो इम्पैक्ट, उनकी इनकम्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो इनकम्स के ऊपर इम्पैक्ट आने की वजह से उनमें इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट हैं, दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एनवायरमेंट, बट एन इंडिविजुअल कांट एडजस्ट, द इनकम इज ओनली लिमिटेड, दे कांट डू द nitty-gritties to balance their portfolios or the उसका असर तो फिर कंजम्पशन पे जाएगा। Yes, कंजम्पशन के ऊपर असर आता है। So that's why consumption related shares and consumption related segments are significantly impacted in such scenarios. Moving on, the oil prices today fell more than 1.5%, reversing early gains as traders grew less worried about a supply crunch after government data showed U.S. refiners ramped up output. In intraday trade, Brent crude was trading at around $107.30 per barrel, while WTI crude prices were at $106.90 per barrel. If U.S. refiners can ramp up the output, Dr. Sharma, फिर problem कहाँ है? Ramp up करते रहें और they will help rest of the world. Yes, ramp up करेंगे, but if the cost of doing business, cost of production is increasing, then the efficiencies will be less. So if the rate is increasing month after month or increasing in the higher trajectory, then that impacts the price cost margins. So ramp up of the production possibilities will only help when you are creating the efficiencies and you are able to sell your products at a competitive market, at a competitive rate in the international market. So that's why you will gain from the exports and also reduce the content of imports. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में जून होने वाले सोने का मूल्य आज 230 रुपए बढ़ा 50,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 350 रुपए उछलकर 61,165 रुपए प्रति किलो हो गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us. And before we close, the headlines once again. Key domestic stock indices tumbled more than 2.5%. Sensex closes below the 53,000 mark. Nifty finishes below 15,800 level. Rupee weakens to 77 rupees and 73 paise against the dollar. And Brent prices decline to trade near $107 per barrel. इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। श्रोताओं की ओर से पूरी टीम को बधाई देते हुए डॉक्टर शर्मा, आपकी ओर से भी हम और श्रोताओं की ओर से भी अब हम विदा लेना चाहते हैं।